दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Basri Juhel, Amanda Plumber, and Michael Chetel. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill quest that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Basri Juhel, Amanda Plumber, and Michael Chetel. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill quest that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million.
तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levigrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plumber, and Michael Chitale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levigrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruhel, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levigrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plumber, and Michael Chitale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levigrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruhel, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levigrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plumber, and Michael Chitale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered.
It explored the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill quest that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrant, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starting Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन बाय रिचर्ड लेवेग्रेंस एंड डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, स्टार्टिंग रॉबिन विलियम्स एंड जेफ ब्रिडेज with Mercedes Ruehl, Amanda Plumber and Michael Chetel. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill quest that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrant, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starting Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन बाय रिचर्ड लेवेग्रेंस एंड डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, starting Robin Williams and Jeff Bridges with Mercedes Ruehl, Amanda Plumber and Michael Chetel. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill quest that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrant, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt,
edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Obist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. तो दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plummer, and Michael Chetale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plummer, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Obist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. तो दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plummer, and Michael Chetale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plummer, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Obist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. तो दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे।
The Fisher King is a 1991 American fantasy comedy drama film written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plumber, and Michael Chitale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill quest that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plumber, and Michael Chitale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill quest that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plumber, and Michael Chitale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill quest that
choose New York romantic comedy with timeless fantasy। अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Lewgrens, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन बाय रिचर्ड लेविग्रेंस एंड डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, स्टार्टिंग रॉबिन विलियम्स एंड जेफ ब्रिडेज with Masri Ruhel, Amanda Plumber and Michael Chitale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fuse New York romantic comedy with timeless fantasy। अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Lewgrens, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन बाय रिचर्ड लेविग्रेंस एंड डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, starring Robin Williams and Jeff Bridges with Masri Ruhel, Amanda Plumber and Michael Chitale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fuse New York romantic comedy with timeless fantasy। अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Lewgrens, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country
United States, language English, budget $24 million, बॉक्स ऑफिस $72.4 million। तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plumber, and Michael Chitale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intertwining of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill quest that fused New York romantic comedy with timeless fantasy। अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumber, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures, release date September 20, 1991, running time 137 minutes, country United States, language English, budget $24 million, बॉक्स ऑफिस $72.4 million। तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plumber, and Michael Chitale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intertwining of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill quest that fused New York romantic comedy with timeless fantasy। अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumber, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures, release date September 20, 1991, running time 137 minutes, country United States, language English, budget $24 million, बॉक्स ऑफिस $72.4 million। तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plumber, and
Michael Jetair. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrantz, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starting Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन बाय रिचर्ड लेवेग्रेंस एंड डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, स्टार्टिंग रॉबिन विलियम्स एंड जेफ ब्रिडेज, with Masri Ruhel, Amanda Plumber and Michael Jetair. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrantz, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन बाय रिचर्ड लेवेग्रेंस एंड डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plumber and Michael Jetair. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrantz, produced by Deborah Hill and Linda Ovist,
स्टार्टिंग रॉबिन विलियम्स, जेफ ब्रिडजेस, अमांडा प्लम्बर्स, मर्सिडीज रूहिल, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Obist Productions, distributed by TriStar Pictures, release date September 20, 1991, running time 137 minutes, country United States, language English, budget $24 million, box office $72.4 million. दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plumber, and Michael Chetale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill quest that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumber, Mercedes Ruhill, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Obist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991, running time 137 minutes, country United States, language English, budget $24 million, box office $72.4 million. दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plumber, and Michael Chetale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill quest that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumber, Mercedes Ruhill, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Obist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991, running time 137 minutes, country United States, language English, budget $24 million, box office $72.4 million. दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Basri Juhel, Amanda Plumber, and Michael Chetel. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Basri Juhel, Amanda Plumber, and Michael Chetel. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Basri Juhel, Amanda Plumber, and Michael Chetel. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intermingling
of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrant, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starting Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Volker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन बाय रिचर्ड लेवेग्रेंस एंड डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, स्टार्टिंग रॉबिन विलियम्स एंड जेफ ब्रिडिज with Masri Ruhel, Amanda Plumber, and Michael Chetel. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrant, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Volker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन बाय रिचर्ड लेवेग्रेंस एंड डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plumber, and Michael Chetel. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrant, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Volker, music by George Fenton,
Production company Hill Obist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plumber, and Michael Chittale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intertwining of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fuse New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumber, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Obist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plumber, and Michael Chittale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intertwining of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fuse New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumber, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Obist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म
written by Richard Lewis and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Basri Juhel, Amanda Plumber, and Michael Chetel. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Lewis, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन बाय रिचर्ड लेविग्रेंस एंड डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, स्टार्रिंग रॉबिन विलियम्स एंड जेफ ब्रिडिज, विद बसरी जुहेल, अमंदा प्लम्बर एंड Michael Chetel. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Lewis, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन बाय रिचर्ड लेविग्रेंस एंड डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Basri Juhel, Amanda Plumber and Michael Chetel. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy.
अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Lewgrens, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starting Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन बाय रिचर्ड लेविग्रेंस एंड डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, स्टार्टिंग रॉबिन विलियम्स एंड जेफ ब्रिडिज with Masri Ruhel, Amanda Plumber and Michael Chetale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Lewgrens, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन बाय रिचर्ड लेविग्रेंस एंड डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, starring Robin Williams and Jeff Bridges with Masri Ruhel, Amanda Plumber and Michael Chetale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Lewgrens, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million.
बॉक्स ऑफिस $72.4 मिलियन। तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plumber, and Michael Chetel. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intertwining of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruhel, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plumber, and Michael Chetel. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intertwining of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruhel, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plumber, and Michael Chetel. The film tells the story of the radio shock
Jack who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intertwining of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrant, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starting Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन बाय रिचर्ड लेवेग्रेंस एंड डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, स्टार्टिंग रॉबिन विलियम्स एंड जेफ ब्रिडेज with Masri Ruhel, Amanda Plumber and Michael Jetair. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intertwining of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrant, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन बाय रिचर्ड लेवेग्रेंस एंड डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plumber and Michael Jetair. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intertwining of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrant, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges,
अमंदा प्लम्बर्स, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Obist Productions, distributed by TriStar Pictures, release date September 20, 1991, running time 137 minutes, country United States, language English, budget $24 million, बॉक्स ऑफिस $72.4 मिलियन। तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Mercedes Ruehl, Amanda Plummer, and Michael Chetale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intertwining of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern-day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plummer, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Obist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991, running time 137 minutes, country United States, language English, budget $24 million, बॉक्स ऑफिस $72.4 मिलियन। तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Mercedes Ruehl, Amanda Plummer, and Michael Chetale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intertwining of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern-day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plummer, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Obist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991, running time 137 minutes, country United States, language English, budget $24 million, बॉक्स ऑफिस $72.4 मिलियन। तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।
दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Basri Juhel, Amanda Plumber, and Michael Chetel. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intertwining of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Basri Juhel, Amanda Plumber, and Michael Chetel. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intertwining of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Basri Juhel, Amanda Plumber, and Michael Chetel. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intertwining of New York City, usually strictly separated social strata,
and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Lewigranz, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन बाय रिचर्ड लेविग्रेंस एंड डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, स्टार्टिंग रॉबिन विलियम्स एंड जेफ ब्रिडिज with Mercedes Ruehl, Amanda Plumber and Michael Chetale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Lewigranz, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991. Running time 137 minutes. Country United States. Language English. Budget $24 million. Box office $72.4 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म रिटन बाय रिचर्ड लेविग्रेंस एंड डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, starring Robin Williams and Jeff Bridges with Mercedes Ruehl, Amanda Plumber and Michael Chetale. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life inadvertently shattered. It explores the intermingling of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill twist that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Lewigranz, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plumbers, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures.
रिलीज डेट सितंबर 20, 1991, रनिंग टाइम 137 मिनट्स, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, लैंग्वेज इंग्लिश, बजट $24 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $72.4 मिलियन। तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम द फिशर किंग हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द फिशर किंग इज ए 1991 अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म written by Richard Levegrance and directed by Terry Gilliam, starring Robin Williams and Jeff Bridges, with Masri Ruhel, Amanda Plummer, and Michael Chetel. The film tells the story of the radio shock jock who tries to find redemption by helping a man whose life is inadvertently shattered. It explores the intertwining of New York City, usually strictly separated social strata, and has been described as a modern day grill quest that fused New York romantic comedy with timeless fantasy. अब इस मूवी के कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस फिल्म डायरेक्टेड बाय टेरी गिलियम, written by Richard Levegrance, produced by Deborah Hill and Linda Ovist, starring Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plummer, Mercedes Ruehl, cinematography Roger Pratt, edited by Leslie Walker, music by George Fenton, production company Hill Ovist Productions, distributed by TriStar Pictures. Release date September 20, 1991, running time 137 minutes, country United States, language English, budget $24 मिलियन, बॉक्स ऑफिस $72.4 मिलियन। तो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।